Assalamualaikum students, this is your Miss SADIA from Chemistry Department. Welcome to my channel Evo Chemistry. How to attempt Federal Board SBISC OMR Answer Sheet. As you know students, Federal Board has introduced an OMR Answer Sheet and E-Sheet for the annual examination of SSC 1 and SSC 2 in 2021. In this year, you are giving exams totally in a different way. So students, you should know about what is OMR. Does anybody know what is OMR? The acronym OMR stands for Optical Mark Recognition. That shows whatever you mark on OMR sheet, computer recognized or read it. OMR is actually a technique to collect information on a form where candidates mark the bubbles to indicate their answers. How are OMR sheets evaluated? The OMR sheets are evaluated using the optical mark recognition technology like manual processing, OMR scanner, and OMR software. This OMR sheet is given by the Federal Board. As you have seen many types of OMR sheet, my dear students, if you look at this OMR sheet, you can see this OMR sheet has some sections. There are total 4 sections of OMR sheet. This is the section 1, which is about the roll number and version number. This is the section 2, which is about the information, and this one is the section 3, which is about the answers, and this is the last and fourth one section, which is about the instructions. Now students, we will discuss all of these instructions one by one. Section 1, which is about the roll number and version number. Yes, if you see, this section has 2 columns. One is for roll number and other is for version number. First of all, you have to fill your roll number in these given boxes or spaces. Whereas just below these boxes, there are some bubbles. And these bubbles have sequence-wise numbers like 0, 1, 2, 3 and so on. How do you fill or mark these bubbles to show your roll number? If your roll number is 063594, how do you fill this roll number on OMR answer sheet? The first digit of your roll number is 0 and the second digit of your roll number is 6. The third digit of your roll number is 3. And the fourth digit of your roll number is 5. And the fifth digit of your roll number is 9. And the last digit of your roll number is 4. By this way, you fill these given boxes to show your roll number. Now students, you will fill these given bubbles in order to show your roll number. As you know, the first digit of your roll number is 0. So you will choose the bubble where 0 is written in the first column. The second digit of your roll number is 6. So you will choose the sixth one bubble and mark it in the second column. The third digit of your roll number is 3. So you will choose the third one bubble in the third column. The fourth digit of your roll number is 5. So you will choose the fifth one bubble and mark it in the fourth column. The fifth digit of your roll number is 9. So you will choose the ninth one bubble in the fifth column. The last digit of your roll number is 4. So you will mark or choose the fourth one bubble in the last column. So students, by this way, you will fill the given boxes and bubbles in order to show your roll number, right? Now, if you fill wrong bubble, yes students,
if you fill wrong bubble, what would happen? Will second OMR sheet be given to you? If you fill wrong bubble in the roll number column, second OMR sheet will not be given to you. आपकी OMR sheet reject हो जाएगी और second OMR sheet आपको नहीं दी जाएगी. So students, try to fill these boxes and bubbles very carefully, right? Now, what is version number? Version number is actually a question paper number. There would be different papers and every paper has its own version number. Here I am going to show you a sample of English objective paper. Here you can see at the most right side there is a 4-digit version number. This 4-digit version number you will write on OMR answer sheet. In the version number column, you will fill those 4-digit version number in the given boxes, and after that you will fill these bubbles in the same manner as we have discussed in roll number. यानी कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने रोल नंबर को पहले बॉक्सेस में फिल किया था एंड देन बबल्स फिल किए थे, उसी तरह से आपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर पर 4-digit वर्जन नंबर गिवन होगा उसको पहले आपने इन बॉक्सेस में फिल करना है एंड देन बबल्स को फिल करना है, राइट? Now information section. Second section of OMR sheet is about the information section. You will write your roll number, version number, subject paper and your signatures. Here this is your roll number, so you will write your roll number 063594. For example, it is your roll number. Now question paper version. ऑब्जेक्टिव पेपर में जो भी वर्जन नंबर गिवन होगा वो आपने यहाँ पर लिखना होगा. नाउ सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का भी उस दिन पेपर होगा वो आपने सब्जेक्ट लिखना होगा. लाइक इंग्लिश का पेपर है तो आपने इंग्लिश लिखना होगा. नाउ पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2. व्यूअर्स, अगर आप SSC 1 का पेपर दे रहे हैं तो आप पार्ट 1 पर टिक करेंगे और अगर आप SSC 2 का पेपर दे रहे हैं तो आप पार्ट 2 पर टिक करेंगे. कैंडिडेट सिग्नेचर, और उसके बाद आप अपने सिग्नेचर्स करेंगे. It was all about the information section. Now the third section is the answer section. Here in this section you will mark the bubbles to indicate your answer. The correct option of your objective will be marked on OMR sheet. Now students, the fourth and the last one section is the instructions section. Students, do you ever read instructions before starting your paper? Mostly students don't read these instructions, and you know these instructions are very important for you. Now students, we will discuss all of these instructions one by one. First instruction is about to attempt the OMR answer sheet is that write your roll number and version number in the relevant spaces and boxes, and then also fill the relevant bubbles for roll number and version number correctly. Now choose the correct answer A, B, C, D by filling the relevant bubbles for each question. इसके बाद स्टूडेंट्स आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर को अच्छी तरह से रीड करेंगे और हर ऑब्जेक्टिव का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा A, B, C, D, राइट, उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप OMR शीट पर बबल को मार्क करके शो करेंगे. नेक्स्ट, यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट टू फिल द बबल्स. Don't choose fountain pen, don't choose gel pen, any kind of pen. Try to use only the ball point, blue or black ball point. But I recommend you try to use black ball point because OMR scanner scan the darkened area. So try to use the black ball point, right? Use of lead pencil is strictly prohibited. OMR scanner cannot scan the bubble that is marked with lead pencil, right? तो आपने lead pencil use नहीं करनी, only use black or blue ball point. Ensure that selected bubble is completely filled. Do not mark any area outside the bubble because OMR scanner can only read the bubble
that is filled 70% to 100%. Less than 70% or more than 100% is not readable by the OMR scanner, right? Here, students, you can see there are the three ways to mark the bubble. Which one shows the correct filling of the bubble? Yes, this one is the correct filling, right? It is the completely filled and the mark doesn't go outside the boundary. While rest of these two shows the incorrect filling of the bubbles. Why? Because in this case, you can see your mark goes outside the boundary. So it shows you have filled your bubble more than 100%. So it would be considered as the wrong filling. Similarly, in this case, you can see this is the incomplete filling of the bubble. So it also considered as the wrong filling or incorrect filling of the bubble. How to attempt federal board SBISC E-SHEET. Use of E-SHEET in SBISC Annual Examination 2021. E-SHEET will be used for SSC 1 and 2 subjective paper of 6 subjects: English, Physics, Chemistry, Biology, Computer and Mathematics. In these 6 subjects, E-SHEET will be given to you, right? What is E-SHEET? Does anybody know what is E-SHEET? An E-SHEET means a computer or electronic sheet. This E-SHEET has a specific space for each answer. This is the first page of your E-SHEET. This first page of E-SHEET has two parts. Upper part is for the students or for you, and the lower part is for the examiners. This is your concern part. Just above the roll number, you can see this is the barcode number. आपने इस बारकोड नंबर पर गलती से भी कुछ भी मार्क नहीं करना किसी पेन या पेंसिल से. अगर आप मार्क कर देते हैं इस एरिया को तो आपकी अटेंडेंस स्कैन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी, राइट? और उसके बाद आपने उसी तरह से रोल नंबर इन बॉक्सेस में लिखना है एंड देन बबल्स को फिल करना है. एंड इस सेक्शन में आप आए तो आपने यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन में लिखना है. अगर आप SSC 1 का दे रहे हैं तो आपने लिखना है SSC 1 एनुअल एग्जामिनेशन. सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का भी पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2. SSC 1 दे रहे हैं तो पेपर 1, SSC 2 दे रहे हैं तो पेपर 2. डेट, आपने उस दिन की डेट डालनी होगी जिस दिन आपका पेपर होगा. नाउ OMR शीट नंबर, यहाँ पर आपने OMR शीट नंबर लिखना है. दिस OMR शीट नंबर you will write on information side of the E-SHEET, right? आपने यहाँ पर OMR sheet number लिखना है. Now, this is not your consent part. This is only for the examiner. Now, instructions for candidates. Students, these instructions are given in Urdu and English both. Don't forget to read these instructions before starting your descriptive paper. जिस तरह से OMR शीट को अटेम्प्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह डिस्क्रिप्टिव पार्ट यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस को आपने रीड करना है लाजमी. आई एम गोइंग टू रीड ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन फॉर यू. इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स. राइट योर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिव पेपर. डू नॉट चूज क्वेश्चन पेपर फॉर रफ वर्क. सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पेपर पर अपना रोल नंबर लिखना है. आपको जो भी डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, आपने सबसे पहले उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लेना है. दिस विल शोज दैट दिस क्वेश्चन पेपर इज योर प्रॉपर्टी. डू नॉट चूज क्वेश्चन पेपर फॉर रफ वर्क. आपने किसी भी सूरत रफ वर्क के लिए क्वेश्चन पेपर को यूज नहीं करना. स्टूडेंट्स, अगर आपने रफ वर्क करना है तो आप E-SHEET की लास्ट पेज पर रफ वर्क कर सकते हैं, बट आपने क्वेश्चन पेपर पर रफ वर्क नहीं करना. नाउ राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आंसर बुक ओनली इन द स्पेसिफाइड स्पेसेस फॉर ईच क्वेश्चन. आपने अपनी आंसर शीट की दोनों तरफ लिखना होगा. लीविंग ब्लैंक लाइंस इज प्रोहिबिटेड.
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेस को कवर करने के लिए लाइन छोड़ देते हैं। आपने लाइन छोड़कर नहीं लिखना। You know students, in each sheet, spaces are allocated to attempt the question. But students, if you don't want to attempt a question, what should you do? No need to write anything there, no need to cross that part, only just leave that space. This is your E-sheet. This is the sample of your E-sheet paper to attempt the short question answers. Space is already allocated to attempt a question. But if you don't want to attempt that question, just leave that space, right? Books, maps, charts, computerized calculator, mobile phones, headphones, etc. as helping examination material are not permitted in examination hall. All the supporting materials that can be helpful for your paper, they are not permitted in examination hall. Besides, peeping in the answer book of the other candidates or writing from his or her script will be treated as use of unfair means. While doing paper, you are not allowed to peeping in the answer book of other student. It would be considered as unfair means. So might be possible strict action would be taken against you. Next. Smoking and carrying of arms in the examination hall is strictly prohibited, right? 7. No one is permitted to leave the examination hall within 1 hour of distribution of the question paper. If one leaves the hall before the specified time, he or she shall return the question paper to the center superintendent. स्टूडेंट्स, पेपर स्टार्ट होने के बाद 1 घंटे तक आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़कर नहीं जा सकते इन एनी केस। और उसके बाद अगर आप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इफ यू वांट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, तो आप आंसर बुक के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी सेंटर सुपरिटेंडेंट को देकर जाएंगे। 1 आवर से पहले आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़कर नहीं जा सकते। Black fountain pen or black or blue ballpoint may be used for writing and lead pencil for drawing diagrams, right? In descriptive paper, you can use fountain pen as well, black and blue ballpoint too, and lead pencil you can use for drawing diagram. 9. Use of erasers of all kinds, including chemicals, is strictly prohibited. It would be treated as tampering with board's documents. Students, that shows that you cannot allow to use Y2 or any other kind of chemical or any other kind of erasers that made of chemical. Because if you apply it, it would be treated as tampering with board's documents. Must write the end at the conclusion of the paper and blank pages or spaces should be crossed. जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आप all questions, all parts attempt करने के बाद, don't forget to write the end at the end of your paper. That shows that now you are done. और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो पेजेस बच जाएंगे या ब्लैंक स्पेसेस बच जाएंगे, वहां पर आपने क्रॉस लगाना है। This is the E-sheet to attempt the descriptive part. Short response questions, SRQs. They are the short question answers, section B and section C based on short response questions. In section B and section C, you attempt question number 2 and question number 3. Now, section B. This is the sample of E-sheet to attempt the short response question of section B. You can see here it is written question number 2 part 1 and here question number 2 part 2. If you want to attempt question number 2 part 1, you can see space is allocated. You have to write your answer
in this given space. The first line you can use for heading if required. In section B, you attempt question number 2 and there are total 8 parts. Out of these 8 parts, you have to attempt any 6. And there are total 14 lines given to you. Attempt short question answers. Now students, you can see this is the question number 2 part 1. You will attempt only the question number 2 part 1. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप ये जगह, ये स्पेस छोड़कर आगे चले जाएंगे. जो क्वेश्चन आपको आता होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी पार्ट आता होगा, आप वो अटेम्प्ट करेंगे या इसी क्वेश्चन में चेंजिंग करेंगे? क्या आप इसको कट करके जो क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं आता, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आता है, तो आप इसको क्रॉस करके जो क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अलाउड. आपने ऐसा नहीं करना. आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं आता, आप ये जगह ऐसे ही छोड़ दें. आपने इसकी जगह अपनी मर्जी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना. आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर जाएंगे, वहां पर जो स्पेस गिवन है वहीं पर जिस क्वेश्चन का पार्ट जहां लिखा है, आपने वो क्वेश्चन वहीं पर अटेम्प्ट करना है. आपने किसी भी क्वेश्चन को काट कर अपनी मर्जी का क्वेश्चन नहीं लिखना. And the second most important thing is that there is no need to write the question. It's understood if it is written question number 2 part 1, question number 2 part 2, question number 2 part 3. It shows that you have to attempt those parts. So there is no need to write the question. And the other most important thing is that there is no need to write Bismillahirrahmanirrahim. आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ें, बट वर्बली पढ़ें, बट उसको लिखने की जरूरत नहीं है. Now section C. This is the sample of E-sheet to attempt the section C. As you know, in section C, you attempt question number 3. It is same as like section B. No need to write question again. No need to write Bismillahirrahmanirrahim. Here it is mentioned question number 3 part 1. It's understood. Here you will have to write the answer of question number 3 part 1. The first line you can use for heading if required. Same as we have discussed in case of section B. In section B, you attempt question number 3 that has almost 7 parts, and out of these 7 parts, you have to attempt any 5. And same in case of section B, there are total 14 lines given to you to attempt the short question answers of section B and section C. Now section D. Extended response questions, ERQs. They are actually the long question answers. Section D are actually the long question answers. 3 questions will be given to you. Question number 4, question number 5 and question number 6. You have to attempt any 2 questions out of 3. This is the sample of E-sheet to attempt the long question answers. Same as we have discussed before. No need to write Bismillahirrahmanirrahim. No need to write the question again. And the first line, you can use it for heading if required. 30 lines are given to you. Because in a one page, there are total 30 lines. But students, are they enough to attempt the long question answers? No, they are not enough. That's why 4 pages for each long question. There is not only a 1 page for long question answers. There are 4 pages given to you to attempt the one long question. These long questions maybe have 2 parts. Now, any question? But students, I want to tell you one important thing is that students, अगर by mistake आपसे wrong question attempt हो चुका है या फिर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके बाद आपको एहसास हुआ कि इससे ज़्यादा अच्छा मैं लिख सकता था या लिख सकती थी, तो अब क्या किया जाए? एंड यू नो कि ई शीट पर हर क्वेश्चन का एक अलग स्पेस गिवन है.
आप उस क्वेश्चन को उस एलोकेटेड स्पेस के अलावा कहीं और अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बट गलती हो गई है तो अब क्या किया जाए? तो उसका सलूशन ये है कि आपने इन्विजिलेटर से कहना है कि मुझे इस क्वेश्चन को अगेन अटेम्प्ट करना है। आप पहले उस क्वेश्चन को क्रॉस करेंगे और फिर आप इन्विजिलेटर से एक और शीट लेंगे, बी शीट। उस बी शीट के ऊपर आप एक क्वेश्चन नंबर लिखकर वो क्वेश्चन को अगेन अटेम्प्ट कर लेंगे। बट स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ 2 टाइम्स ही चांस दिया जाएगा। अगर आपसे गलती हो गई है, क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हो गया है या आपने गलत आंसर लिख दिया है या आपको एहसास हो रहा है कि मैं इसको और ज़्यादा अच्छा बेटर वे में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप इसको सिर्फ 2 चांस अवेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि 14 लाइन्स ज़्यादा हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में समटाइम्स हम 3 to 4 लाइन्स में हमारा आंसर कवर हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन 3 to 4 लाइन्स में ख़त्म हो चुका है, आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है, बाकी स्पेस को आपने छोड़ देना है, राइट? क्योंकि आपको कुछ स्पेस एक्स्ट्रा दी गई है, क्योंकि हर एक का राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। यस स्टूडेंट्स, मार्जिन आपने ड्रॉ करना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पेस गिवन है, दीज आर दी लाइन्स, बट बिफोर स्टार्टिंग दी लाइन्स, यहाँ पर लाइन्स के स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे, राइट? और स्टूडेंट्स, आपने ये वाली जो स्पेस है यहाँ पर नहीं लिखना। जहाँ से लाइन्स स्टार्ट हो रही हैं आप वहीं पर लिखेंगे और जहाँ पर लाइन स्टॉप हो रही है आप वहीं पर स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेंगे। ये जो स्पेस गिवन है आपने यहाँ पर नहीं लिखना। I hope students you have understood well, but still if you have any query you may ask in comment section. Take care of yourself. Allah Hafiz.